बात करेंगे क्लास +1 के चैप्टर नंबर 5 दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में से टॉपिक मॉडुलस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर की। हाउ वी रिप्रेजेंट, सपोज z is a complex number and modulus means magnitude, means the numerical value related to this complex number is called modulus of this complex number and it is represented by z is a complex number और दो बार्स इसके साथ लगा देते हैं तो वो सपोज z is a plus iota b, then its modulus will be under the root a square plus b square. This is called modulus of a complex number. And now properties related to this modulus of a complex number. Property number 1, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी है वो है that if I multiply a complex number with its conjugate, then it will become modulus of this complex number's square. So if z is a plus iota b, it means it is a plus iota b and conjugate is a minus iota b. If we multiply, this has become an identity a square minus b square, means a square minus iota b square. That is a square minus iota square b square, and we know that iota square is -1. So that has become a square plus b square, and that is modulus of z whole square. This was modulus of z. So this is first property and we will use this property at so many places. तो जब कभी भी किसी का मॉडुलस का स्क्वायर, यानी we can write it as complex number multiplied its conjugate. तो conjugate of a complex number is also a complex number. So this is the property number 1. So now let's move to the another properties. Number 2, second property says, property number 2 says कि भाई अगर complex number का मॉडुलस 0 है, if modulus of any complex number is equal to 0, then automatically z has to be 0. तो z भी यानी complex number भी 0 होगा. दूसरे शब्दों में बात करें, और अगर मान लीजिए कोई complex number 0 है तो उसका modulus 0 होगा. Vice versa, if z is equal to 0, its modulus is 0. If modulus of any complex number is 0, then complex number is 0. Implies on both sides. We can write it like this way. Implies on both sides. यानी अगर मॉडुलस 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर 0, और अगर कॉम्प्लेक्स नंबर 0 है तो उसका मॉडुलस भी 0. नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 3. थर्ड प्रॉपर्टी सेज, कहता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस उसके कॉन्जुगेट के मॉडुलस के भी बराबर है और उसी कॉम्प्लेक्स नंबर के नेगेटिव के भी इक्वल है. So now let's check it out. I know that modulus of this z is under root of a square plus b square. So conjugate will be a minus iota b, और अगर इसका मॉडुलस आप फाइंड आउट करते हैं तो इसका मॉडुलस भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस z का भी क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. सो चेक करके देखते हैं आता है या नहीं आता है. सो आई नो दैट दिस स्क्वायर इज इक्वल टू z इंटू z बार. सो मल्टीप्लाई करते हैं, इट इज a प्लस आइटा b मल्टीप्लाइड विद a माइनस आइटा b, दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एंड दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. Now let's talk about
इसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर, तो दैट विल बी कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट का फिर से कॉन्जुगेट, एंड कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट इज अगेन दैट सेम कॉम्प्लेक्स नंबर. So it means it will be a minus iota b multiplied with a plus iota b, and that will be a square plus b square, and conjugate का modulus is equal to under root a square plus b square. Similarly, negative of this complex numbers modulus will also be under root of a square plus b square. Now let's move to next property number 4. अभी आपने तीन प्रॉपर्टीज देख ली हैं, इनका आप आगे इस्तेमाल करेंगे. नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रॉपर्टी नंबर 4. कहता है अगर मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर लूं, उनकी प्रोडक्ट करूं और फिर मॉडुलस निकालूं, या मैं इनके मॉडुलस निकाल करके मल्टीप्लाई करूं, द वैल्यू रिमेन्स सेम. सो नाउ लेट्स चेक इट आउट. लेट Z1 इज a plus iota b and Z2 is c plus iota d. So now let's multiply both of them and let's find out the modulus of their product first. Means Z1 into Z2. So आपको मालूम है अगर मैं किसी का भी मॉडुलस निकालता हूं तो इसका मतलब उनकी इसका स्क्वायर हो जाता है Z1 into Z2 मल्टीप्लाइड विद Z1 Z2 का conjugate. So Z1 into Z2, that is a plus iota b multiplied with c plus iota d multiplied with a minus iota b multiplied with c minus iota d. If I multiply both of them, this will become a square plus b square and this will become c square plus d square. और इनको मल्टीप्लाई करें तो दैट इज कम a square c square plus a square d square plus b square c square plus b square d square, and Z1 into Z2 modulus will be under the root a square c square plus a square d square plus b square c square plus b square d square. Now let's multiply first of all, find out the modulus and then multiply. So that is equal to under the root a square plus b square multiplied with under root c square plus d square. Power same means base multiplied. So that has come a square c square plus a square d square plus b square c square plus b square d square. Hence proved. So this is property number 4. Now let's move to the next property. Property number 5. प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है आपको? इट सेज दैट अगर आप डिवाइड करते हैं और फिर इनका मॉडुलस लेते हैं या मॉडुलस लेकर के डिवाइड करते हैं, द वैल्यू इज सेम, बट इन दिस केस मॉडुलस ऑफ Z2 शुड नॉट बी 0. या दूसरे शब्दों में कहें तो Z2 मस्ट नॉट बी 0, क्योंकि आपको याद है फर्स्ट प्रॉपर्टी से दैट इफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, its modulus will be 0. If its modulus is 0, complex number is also 0. So this is property number 5. Property number 6 is the most important property, and that is called triangle inequality. Triangle inequality. If I add two complex numbers and if I take the modulus, then it will always be less than equal to modulus of Z1 plus modulus of Z2. This is called triangle inequality. Why it is called inequality? Because they are not equal, they are less than or equal to. So that is why it is called triangle inequality. Triangle inequality क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको याद होगा कि ट्राइंगल के अंदर always two sides are always greater than the sum of two sides is always greater than the third side. So वहां से इसका इस्तेमाल किया हुआ है, तो इसको अब हम प्रूव करेंगे. I'll take Z1 plus Z2 modulus square. We know that it is Z1 plus Z2 multiplied with Z1 plus Z2 conjugate. So मान लेते हैं let Z1 is a plus iota b
and Z2 is equal to C plus iota D. Okay. Now, if I multiply, or this will become Z1 plus Z2 multiplied with Z1 conjugate plus Z2 conjugate. So that has come Z1 conjugate plus Z1 Z2 conjugate plus Z2 Z1 conjugate plus Z2 into Z2 conjugate. And we know that Z1 into Z2 conjugate, that is equal to Z1 modulus square. This will also be plus Z2 modulus square. Now, can I write it as plus Z1 Z2 conjugate plus Z1 Z2 conjugate का conjugate. Now both these terms are same, but one is without conjugate and another is with conjugate. So आपको याद होगा Z1 Z plus Z conjugate, ये किसके इक्वल होता था? ये होता था twice real part of Z. याद हो गया आपको? Twice real part of Z. अब can we write it as twice real part of Z1 Z2 conjugate? So that has come Z1 modulus square Z2 modulus square plus twice real part of Z1 Z2 conjugate. अब जो real part है twice, real part is always less than its conjugate. So real part is always less than. So this equality has become less than equal to Z1 square plus Z2 square plus twice Z1 Z2 twice Z1 Z2 modulus. Now you can see that this has become a formula a square plus b square plus 2ab, that is less than equal to Z1 plus Z2 whole square, and this square is cancelled with this square and the value has come modulus of Z1 plus Z2 is always less than modulus of Z1 plus modulus of Z2. So this is one of the most important property. So here we complete the concept of modulus of a complex number. So in the next video we will be discussing questions related to the conjugate also, modulus also. Thank you very much.